Okay, let us continue with those who want to join on YouTube, they can join again. So, this is lecture number 19. So, we were uh, discussing PN junction. We had just drawn the band diagram for the PN junction. Now, we need to do the calculations for how this is going to change. Your band is going to change when you're moving from P side to N side. Okay, and what are going how much will it what will this be? Okay, this is called as VBI. Okay, the difference between the conduction band on the P side and N side is called as VBI, which is also called as the built in potential. Okay, does anybody have a question? Vamshi, please mute yourself if you don't have a question. Vamshi, please mute yourself. So we know that this EI is also going to be parallel to EC. Okay, so we can use that also. So if you look at this, it is going to be the sum of these two quantities, isn't it? VBI is going to be the sum of these two quantities. Okay, and this quantity is called, let us call this particular quantity as minus E phi Fn. Okay, and this quantity as E phi Fp. Okay, phi Fn and phi Fp are two potentials. Okay, and we'll get into that in a moment, what those values are. Okay, so what is going to be your VBI? This is E times VBI. Okay, because we're talking about energy over here. Okay, so this is E times VBI. VBI is a potential, so potential times electron charge is going to be your energy. Okay, so what will be the value of phi Fp? Phi Fp की value क्या होगी? What is phi Fp? If you look at this, क्या है वो? Mathematically क्या है phi Fp? Can you look at it and see? Tell me. Sir, EI minus EF. Yeah, EI minus EF. Okay, so phi Fp, I'm going to erase this part because we no longer need this. So phi Fp is EI minus EF. Okay, and what is phi Fn? इसको मैंने माइनस टाइम्स phi Fn लिखा है. Okay, so minus phi Fn is EF minus EI. Okay, minus phi Fn is EF minus EI. Okay, and again, so if I were to write it in positive terms, phi Fn is going to be EI minus EF. Okay, so phi Fn is also, phi Fp is also EI minus EF, and phi Fn is also EI minus EF. Okay, both cases, that is why I chose my minus sign over here, although it was not necessary, but I chose a minus sign deliberately because I wanted to give a single definition for phi F. Okay, both on the P side and inside it is EI minus EF. Okay, so if I were to write this, and I know that the doping on this side is Na and on this side is Nd, so can I find out the values of phi Fn and phi Fp? Please go ahead and calculate the values of phi Fn and phi Fp. I'll give you a couple of minutes to do that. We already know the value of Na, Nd and Ni. Aryan, please mute yourself. Yes, sir. आर्यन म्यूट कर लो यार, तुम्हारे फोन की आवाज आ रही है टिप 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 टिप.
Can somebody tell me the value of phi fp? Come on. अरे भाई बताओ. Sir, KT times ln of Na by Ni. So phi, oh, I made a mistake over here. It is E times. Okay, I made a mistake here. Please correct it. This is E times phi fp is Ei minus Ef, and E times phi fn is E times, because phi f is potential. Okay, so I made a mistake over here. So please correct these two quantities. It is E times phi fp. So phi fp, we know that P0 is equal to what? Ni exponential EF minus EI over KT. Is that correct? Okay. So far away on the left hand side, P0 is equal to Na. Okay, far on the left hand side. We are doing the calculation over here. Okay, we are doing the calculation far away from the depletion region. Okay, we are talking about a normal. So this is effectively the same material as it was before joining. Okay, so this is a p-type material. So in the p-type material, far away from that, it is Na. P is equal to Na is equal to Ni exponential Ef minus Ei over Kt. Okay, so you can say this is equal to, yeah, E times phi fp. Is that okay? So your phi fp becomes equal to phi t. What is phi t? Phi t is Kt by Q, Kt by E. Okay, Kt by E is phi t, if you remember that. Phi t is Kt over E. Okay, phi fp is equal to phi t ln Na over Ni. Is that okay? What about phi on the right hand side, far away from the from your depletion region? On the right hand side, it is going to be Nd Ni exponential, yeah, Ef minus Ei over Kt. ठीक है? So Ef minus Ei is minus of Ei minus Ef. ठीक है? So if I put the minus sign and all those things, we'll get minus phi fp is equal to phi t ln Nd over Ni. ठीक है? Not phi fp, sorry, phi fn. Now what is your built-in potential? Built-in potential की वैल्यू क्या है? VBI की वैल्यू क्या होगी? VBI is going to be mod of phi fp plus mod of phi fn. ठीक है, इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स का सम. Okay, it is going to be the sum of the two magnitudes. Okay, we do not need to worry about the sign. We are just talking about this difference and this difference. We'll add those two together. Okay, so mod of phi fp plus mod of phi fn is going to be your VBI. So if you add these two together, what do you get? क्या आएगा? If you add these two quantities together, you are going to get phi t common. Okay, ln this plus ln of this. Okay, ln a plus ln b is what? Ln a into b. Okay, ln a plus ln b is ln a b. Okay, so phi t ln na nd over ni squared. ठीक है? Please understand that. Please remember this Na and Nd are the doping concentrations in two different regions. Okay, they are not at the same place. Na and Nd are not at the same place. Please understand that. Na is far left, okay, and Nd is far right. Okay, so these two are Na and Nd are at two different regions of your material, of your device. Okay, they are not in the same place. If they were in the same place, then what would happen?
अगर वो एक ही जगह पर होते तो क्या होता? क्या होगा अगर एन ए और एन डी एक ही जगह पे होते तो? Which of the either of those two, either acceptor or donor is going to overpower the other thing. Okay, so it will no longer be a p-n junction. अगर na और nd अगर पूरे मटेरियल में हमने सब जगह पर डाल दिया na और nd, then it will be only one kind of material, either p type or n type, depending on which of the two is higher. Okay, so please remember that na and nd are in two different regions. So ये हमारी vbi की वैल्यू आ गई. Sir, what is our Yeah. VBI means E times of VBI is difference of conduction band energy at P side minus at N side. That is E times VBI. Yeah. So sir, how we wrote it in this expression in terms of FP and FN, phi FP and phi FN? If this is the difference, won't the difference be the same in your EI? ये भी VBI नहीं होगा? What do you think? Who was asking the question? Yes sir, I was asking. Yeah, Manav. Won't this be the same? Because they are parallel to each other. Ah yes sir, yes sir. Okay. So I wrote that this is the difference, but I calculated this because these two are parallel to each other. Okay, so the difference in the two places is going to be the same. Okay, तो हमने VBI निकाल लिया, हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया XP और XN के बीच में. Okay, and couple more things remain to be seen. What is going to be your electric field in this system? Electric field कैसी होगी? बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? So I'm going to write this over here. Xn nd is equal to xp na. And we found out that VBI is equal to ni phi t exponential na nd over ni squared. Okay, so these are the two relations that we have just derived. So what is going to happen to the electric field? Now let us try to calculate the electric field. You will understand why we are doing this in a couple of minutes. Okay, we are trying to, so what we are doing, we are trying to do is we are trying to find out how your potential is going to vary throughout. So we are trying to find a relation for your potential versus x. Okay, that is what our goal is. If we know the distance, the potential versus x, अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा? किसने पहले पूछा था? इंटरवल से पहले किसने क्वेश्चन पूछा था? संजना, was that you? That इसका शेप कैसा होगा? Yes, sir. Yeah. So if we know that the shape of the potential, what will we know? अगर potential का shape पता चल जाए हमें, Then how will energy का change पता चल जाएगा? yeah, how energy का will change, it will be opposite of that. Okay, so that is our goal over here. We are trying to calculate that. So, but to find potential, we need to find the electric field. If we know the electric field, we can find the potential. Okay, so that is what we are doing now. So यहाँ पर electric field क्या होगी इस region में? What do you think is going to be the electric field? Again, we are not applying any external forces. Okay, this is just sitting there in the let us say on an insulating table. What is going to be the electric field in this region? Aryan, क्या होगी? आर्यन भाई कहाँ गायब हो गए यार आज? अविरल, why don't you say? क्योंकि तुम unmuted हो already.
Sir, in the P region, away from the depletion region, the electric field would be zero, and Yeah, similarly in the on the n N side it is region. going to be 0. Okay, so electric field यहाँ पर भी 0 होगी. So electric field here is going to be 0 because there is no separation of charges. Okay, and there is no externally applied electric field also. There is no charge on this side which is separated from the charge on that side. So in all those cases, so that is why your electric field is going to be 0 over here. Similarly, your electric field is going to be 0 in this region. Okay, so now you know the boundary conditions. Boundary conditions are that the electric field at minus xp, so E minus xp is also going to be 0, and E xn is also going to be 0. So you know those two boundary conditions for this particular. And what do we know? What is the relation between electric field and charge density? याद है क्या लिखा था हमने? कौन सी लॉ होती है? गॉस लॉ होती है वो. Relation between electric field and charge density. It is Gauss law dE and Poisson's equation. dE by dx equals to rho equal by to E. rho over epsilon. Okay, and what is the epsilon in this case? It is epsilon of silicon. Okay, this is the epsilon of silicon because everything is happening inside silicon. Okay, so we'll instead of epsilon naught, we take the epsilon of your material. Okay, the material for silicon. Anybody know what the value of epsilon is? So epsilon silicon is equal to K silicon, where K silicon is your dielectric constant for silicon into epsilon naught. Does anybody know the value of dielectric constant for silicon? पता है किसी को? Okay. K silicon is 11.7. Okay, it's a very high quantity. So you can use that to do this calculation. But in any case, we are going to do in terms of the means not the numeric values, but the expression. Okay, variables. Okay, so we'll just use epsilon silicon over here. So what is the value of rho? So we'll do the integration. So we can integrate on both sides. On if we were to do, we can do a piecewise integration. Why are we doing a piecewise integration? Because we have charge density which is constant in this region. Okay, charge density in this region is constant, and charge density in this region is also constant. Okay, so we'll do an integration from minus xp to 0. Okay, so we can do E dE integrated from so electric field at minus xp to electric field at x. Okay, is equal to 1 over epsilon si into rho. What is the value of rho between minus xp and 0? What is the value of rho between minus xp and 0? Anybody? Rho की वैल्यू क्या होगी? Na Sir, into Na. Na times minus E. Okay, we are talking about charge density, not the carrier density. Okay, charge density and carrier density are two different quantities. They are multiplied by your charge value. Okay, so the charge density is going to be minus E times Na. Okay, so minus E into Na, that is your charge density, multiplied by dx. Okay, from minus xp to x. So this equation is valid between minus xp and 0. ठीक है? So E times Na is a constant quantity, so we can take that out. So the only thing that remains is dx. So integral of dx is x. Okay, so we can say E x minus E minus xp is going to be equal to minus E Na over epsilon silicon multiplied by x minus xp. Is that okay? So I'm going to erase this.
So what do we know? X minus xp is going to be x plus xp. So and e minus xp, we have already written that e minus xp is 0. So ex is going to be equal to minus e na over epsilon silicon into x plus xp. Okay, this is for x between minus xp and 0. ठीक है. Now can you tell me what will be the value of E at 0? E0 की वैल्यू क्या आएगी? E0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. We can apply. See, this equation is this integral was valid between minus xp and 0. So we can just apply the value of x equal to 0 over here and we'll get the value of E0. E0 की वैल्यू क्या आई हमारी? Minus E na xp over epsilon silicon. That is the value of E0. हमें E0 पता चल गया तो हमें इस पर्टिकुलर साइड की भी बाउंड्री कंडीशन पता चल गई. Okay, I know the value of E0 over here and I know the value of Exn. Exn is 0. We already know that, and E0 is this particular quantity. Okay, so we can use that to find out. अब इस यहाँ पर equation क्या होगी? We can apply the same equation on the right hand side. Okay, this same integral. Okay, but it is going to be a little bit different over here. So dE integral from E0 to Ex is equal to what is your 1 over epsilon Si integral of rho. What is the value of rho on the right hand side? यहाँ पर rho की वैल्यू क्या है? जिसने अभी तक कभी आंसर नहीं किया हो ऐसा कोई? रुक जाओ एक सेकेंड, आज मुझे पूछने दो. ज्ञान वैभव, ज्ञान वैभव, ज्ञान, come on man. Yes, sir. Yeah. Minus E into ND. Minus E into ND. Why do you say minus? यहाँ पर चार्जेस किस टाइप के हैं ऑन द राइट हैंड साइड? नेगेटिव. नेगेटिव है यहाँ पर. आयंस जो हैं ओ सर पॉजिटिव है यार, लिखा हुआ है, दिख रहा है या नहीं? हमने यहाँ से अगर if we are going to lose electrons then we are going to leave behind positive charges, no? We have lost electrons from this region. Okay, so we have positive charges, so the charge density is going to be E times ND times dx is your integrating from 0 to x. Okay, ND is obviously constant, E is constant, so we can take those quantities out. If we take those quantities out and integrate it, we are going to get Ex minus E0 is equal to E ND over epsilon silicon into x minus 0. ठीक है? And what is the value of E0? We already calculated that over there. So if we take those two quantities, अब E0 को भी हम इधर लिख लें तो Ex की वैल्यू आएगी E over epsilon silicon into NdX minus Na x p. ठीक है? So this is valid for x less than xn greater than 0. ठीक है? तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई. So what can you say if you were to plot the electric? ये सबने कर लिया ना इधर? I'm going to erase this part now on the left hand side.
So if I were to plot electric field versus x, what will it look like now? कैसा दिखेगा वो? देखो यार उन दो ग्राफ से बताओ. सब We already equal know try- that it is going to be 0. So it is going to be 0 in this region until minus xp, and it is going to be 0 beyond xn. Okay, beyond xn it is going to be 0, and beyond minus xp on the left hand side is going to be 0. We already know that. बताओ यहाँ पर कैसा दिखेगा? So triangular with maximum at the origin. Yeah, triangular with maximum value at the origin, maximum magnitude at the origin. But if you look at it, it is going to be in the negative direction. Okay, Ex is a negative quantity. So because xp is a positive quantity, we've intentionally taken xp in such a manner that it's a positive quantity. Okay, because we've written the negative intercept as minus xp. So xp is a positive quantity. We have taken it intentionally taken xp in such a manner. Okay, that xp is a positive quantity. So minus, if you look at this is a positive quantity, this is a negative quantity which is smaller than xp. Okay, the magnitude of this x is always smaller than xp. Okay, so this quantity is always going to be positive. These all of them are positive anyway. So minus of a positive quantity is a negative quantity. So it is always going to be, this is going to be a negative quantity. So it is going to go like this. Okay, and this is the value E of 0. ठीक है? And on the right hand side, if you look at it, इसको देखो, ndx and ndx minus naxp. What do we know about relation between ndxn and naxp? ndxn और naxp में क्या relation है? Equal. And they are equal. Okay, and x is always smaller than xn. So this quantity will always ndx is always going to be smaller than naxp. So since this is always smaller, this is going to be a negative quantity in all all places where this equation is valid. Okay, so this is also going to be a negative quantity. This is also going to be a negative quantity everywhere where these two equations are valid. Okay, and they will be linear because if you have x to the power 1, x to the power 1 again here, so they will be linear. Okay, and they will be continuous also. Why? Because there is no infinite charge present at any place. Okay, if you had an infinite charge present in a particular situation, infinite means an infinitesimally small, thick, thin sheet of charge, then you could have seen a change in electric field abruptly, but there is no possibility of that happening over here. So this is a continuous quantity. Okay. So this is how your electric field looks like. So Sanjana, is that clear? Your electric field is going to look like this. Yes, sir. Okay, but what will happen to the potential? What is the relation between potential and electric field? किसी को याद है? Sir, E बराबर negative of du by dx. Yeah. So let us use the term psi for potential. Okay, if I use the term psi for potential, okay, so E is equal to minus of d psi by dx. Okay, that is the relation between electric field and potential. Again, potential is never defined independently, but let us say that for this particular situation, we assume that the potential of this point is psi is equal to 0. Okay, we can choose any value. It does not really matter because finally what matters is the difference between two places, which is going to be the same, irrespective of what psi you choose over here. Okay, so I am assuming psi is equal to 0 over here. If I assume that, so psi minus xp is equal to 0. Okay, it is going to be the same potential everywhere since the electric field is 0. If the electric field is 0 in this whole region, if I choose psi to be 0 over here, the psi is going to be 0 here also because integral of 0 is 0.
Okay, so d psi by dx is equal to minus e. Okay, so again we will do a piecewise integration. Okay, one integration in this part, another integration in this part. So let us do that. So dx, ठीक है, and what is the value of e? E की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पर. E is minus E Na over epsilon silicon into x plus xp. Okay, so this is the value of E into dx integrated from 0 to minus xp to x, integrated from psi of minus xp to psi of x. ठीक है, इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? We already know that the psi of minus xp is 0. We have assumed that. Okay, so psi x, इसको इंटीग्रेट, ये माइनस माइनस, ये दोनों माइनस जाके प्लस बन जाएंगे. E Na over epsilon silicon is going to get out. Okay, so the only thing that will remain is x plus xp. Okay, so x plus xp is x squared by 2 plus xp into x. So that is the integral on the right hand side. On the left hand side, so this is going to give me psi of what? X is going to be equal to E Na over epsilon silicon into x squared over 2 plus xp x. ठीक है, between, so the values that you have to put for x are minus xp and x. ठीक है, तो डालो क्या आएगा इसका? बताओ भाई, ये वैल्यूज डाल के क्या आएगा? तो माइनस एक्स पी डालेंगे इसमें. विल लुक एट द सेकेंड वैल्यू. माइनस एक्स पी इज गोइंग टू बी minus xp squared plus xp squared by 2. So that is going to give me xp squared, that is going to give me minus xp squared by 2. ठीक है, अब माइनस का माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो psi x, you can do the whole calculation. You will find that psi x is going to be E Na over epsilon silicon 2 is x squared plus xpx, not plus xpx, plus 2xpx, okay, plus xp squared. Okay, so this is for minus xp x 0. ठीक है, Sir, why we have taken phi of minus xp as 0? we can choose it to be any value. Sure. Do you agree or no? I explained it quite a lot. So like the reference level you are taking it as 0. Yeah, you can choose any reference, because potential cannot be defined absolutely. You have to define it with reference to something. So I have chosen this as my reference. Okay. Yes sir, yes sir. Sir, it is 3xp square. 3xp square. No. See, you're going to put minus xp over here. If you put minus xp, what do you get? Minus xp squared plus xp squared by 2. Minus xp squared plus xp squared by 2 is going to be minus xp squared by 2. Minus xp squared by 2, which will be subtracted, is going to give you plus xp squared by 2. Is that okay or not? Vamshi. Sir, but when we keep minus xp, we have to put minus sign in front of that.
Yeah, that is why it became plus. How did you get 3? 3 तो तभी होगा ना इन दोनों का साइन सेम होगा. I think you are misunderstanding what we are doing. Okay, sir. My mistake. Okay. So ये निकल गया. अब सिमिलरली प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, करो यार, मैंने बहुत कर लिया आज इंटीग्रेशन, अब तुम करके बताओ मुझे. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ psi x इन दिस रीजन? करो भाई कैलकुलेशन. ओके, मैं एक छोटी कैलकुलेशन कर दूंगा, तुम्हारे साइज 0 की वैल्यू लिख दूंगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइज 0? इट इज गोइंग टू बी E NA / 2 एप्सिलॉन सिलिकॉन इनटू XP स्क्वायर्ड. ये आ गया साइज 0. ठीक है, बाकी तुम करो. हो गया किसी का? So इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाली इक्वेशन लगेगी एंड दिस विल बी योर बाउंड्री कंडीशन साइज 0. इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर. क्या आया? Sir, ND by 2 epsilon into 2xn. एक सेकेंड. E टाइम्स ND / 2 एप्सिलॉन, ये हाँ सर, into हाँ. 2xn इंटू xn xn x या minus x square माइनस x square plus xp square. x स्क्वायर माइनस sir. x स्क्वायर Yes, Plus. sir, plus xp square. xp स्क्वायर. दैट इज ऑल. Yes, sir. Can somebody verify whether this is correct or not? Sir, I think it will be plus of x square and minus of 2 times Na xp by nd. See, you can apply some previous relations as well. Okay, we already know that xn nd is equal to xp na. Okay, you can use that also. To get rid of na from this part. Okay, ये वाली बाउंड्री कंडीशंस में से Na को हटाने के लिए वी कैन रिप्लेस Na xp बाय nd xn. विवेक क्या आ रहा है? हाँ सर, ये मैंने मतलब थोड़ा गड़बड़ कर दिया. यहाँ पे ND जो है ना, ये n होगा और सर XP स्क्वायर वाली टर्म मतलब इसके साथ अलग कोफिशिएंट आएगा, Na आएगा. Anybody else is getting? यार मेरे को खुद ही कर लेता है यार, मुझे ऐसा लग रहा है. सर ये सही है, बस केवल x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होगा और 2xn x का माइनस होगा, बाकी सब सही है. ये होगा. यस सर. सोचने दो.
वो तो नहीं हो सकता यार, माइनस तो नहीं आएगा बाहर यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम देखो इसमें एक पैराबोला नीचे की तरफ फेस कर रहा है, एक पैराबोला ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए ना, या नहीं? सर बताओ। प्लस 2x xn माइनस x स्क्वायर प्लस xn xp। So this is plus and this is minus and this is xp xn. चलो बुक से देख लेते हैं क्या किया बुक वाले ने। मैंने 2 मिनट के लिए तुम्हें दिया, थोड़ा वो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, यू आर राइट, दिस इज करेक्ट नाउ, ओके दिस इज करेक्ट, एक्स पी एक्स, हाँ ठीक है, ओके, सो दिस इज करेक्ट। तो आया समझ में कैसे तुम्हारा, इससे पहले कौन था कि तुमने प्लस बोला था ना एक्स स्क्वायर, तो वो गलत होना चाहिए था। यस सर, वो मैंने क्योंकि बाहर का माइनस लेना भूल गया था। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा लॉजिकली भी सोच लिया करो कभी कभार, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पैराबोला नीचे जा रहा है, एक पैराबोला ऊपर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, तो दो जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का टर्म है उसका कोफिशिएंट के साइंस डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, दैट इज गिवन, ओके। सो यू हैव दैट, सो व्हाट विल बी योर साई एक्स एन, साई एक्स एन की वैल्यू क्या आई, इसमें डाल दो साई एक्स एन को, क्या आएगा, ई टाइम्स एन डी ओवर 2 एप्सिलॉन एस आई इंटू एक्स एन डालना है ना, सो 2 एक्स एन स्क्वायर्ड माइनस एक्स एन स्क्वायर्ड इज गोइंग टू बी एक्स एन स्क्वायर्ड प्लस एक्स पी एक्स एन, ठीक है, is that okay? So we can take out xn common, okay, we're going to take out xn common and dxn into xn plus xp, so that is your psi xn, ठीक है, हमें psi xn पता चल गया। what should be the value of psi xn, psi minus xp is 0, what अभी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, psi xn की वैल्यू, psi xn minus psi xp is how much, क्या है वो, कुछ दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पे, ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है psi xn minus psi xp नाम की, VBI। VBI, okay, it's going to be equal to VBI, so I'm going to erase all these quantities, यहाँ से सारी ये गायब कर देते हैं अब, okay, so we find out that psi xn minus psi x minus xp is equal to VBI, okay, VBI हमें ऑलरेडी पता है, psi xn क्या कहते हैं अब हम, psi xp is 0, so psi xn is equal to VBI, so we can apply that, this is equal to VBI। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो गई, कितने वेरिएबल्स थे अभी तक, हमें क्या चीज़ नहीं पता है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं पता है अभी, बताओ संजना, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है इसमें क्या वेरिएबल्स थे, किस चीज़ के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एक सेंस में, इस इक्वेशन में हमें क्या नहीं पता है, इन सारी इक्वेशंस में, phi t, phi t is known to us, kt by q, phi t is kt by q, okay yeah, sir, yeah Sanjana, go ahead, सर सब तो पता है हमें। नहीं xp और xn की वैल्यू कहाँ पता है हमें,
अच्छा हाँ, XP और XN unknown है. Yeah, xp and xn are unknown to us. Okay, so we are going to use this equation, one equation in xp and xn we have this, okay, and another equation in xp and xn, this is equal to vbi. So this is the second equation in xp and xn. We can apply these two equations to get the value of xp and xn. We have two equations, two variables, we can find out the values of xp and xn. ठीक है, अब सबको समझ में आ गया कि VBI will be a quadratic function. Okay, it will be a quadratic on one side, sorry, this potential. Okay, potential is going to be a quadratic function. तो अगर हमें potential, अगर हमें बैंड डायग्राम दिया हुआ है और हमें potential का प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, क्या आएगा potential का प्लॉट, अगर बैंड डायग्राम से डायरेक्टली करना हो तो. ये तुम्हें बैंड डायग्राम दिया हुआ है, इससे मुझे पोटेंशियल का प्लॉट करना है तो क्या आएगा हमारा, इसको देख के हम बना सकते हैं इमीडिएटली या नहीं, बताओ. बताओ भाई, इसको देख के हम पोटेंशियल का प्लॉट बना सकते हैं बैंड डायग्राम को देख के. We know that EC is minus E times your potential, minus E times psi. We already know that. तो अगर ये डायग्राम दिया हो तो क्वालिटेटिवली हम बना सकते हैं, या क्वांटिटेटिवली भी बना सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली बना सकते हैं या नहीं. क्या होगा पोटेंशियल का प्लॉट, पोटेंशियल वर्सेस एक्स, इसको देख के अगर बनाना हो तो मैं, अरे भाई माइनस टाइम्स ई सी है ना, माइनस ई सी बाई ई, तो पोटेंशियल इज गोइंग टू लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. अगर ये तुम्हें दिया हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी अ साई, जहाँ पर so the places where it was higher this will become lower, and the places where your conduction band was lower this will become, your potential will be higher. Okay, the same exact, थोड़ा मैंने थोड़ा गलत बना दिया है खैर, लेकिन it will have the exact same shape. ठीक है. And if you were to look at this, अगर यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ पोटेंशियल वर्सेस एक्स इन सारी इक्वेशंस की हेल्प से, so it will look something like this. Okay, it will look something like this. So this is minus xp and this is plus xn. Okay, तो अब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो हम we can find out the value of xp and xn. Okay, so please find that out and let me know what the value of xp and xn is in terms of VBI. VBI की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. VBI की वैल्यू तुम VBI ही मान सकते हो क्योंकि that is known to us and that is this value. Okay, you do not need to replace VBI with this in this equation. Okay, so please find out the value of xp and xn. क्या आएगा, so in this equation replace by quantities so that this becomes an equation in xn. xn में अगर इक्वेशन बनाएं इसको xn के टर्म्स में इक्वेशन बनाएं तो क्या होगी इस वाली इक्वेशन को, बताओ. So I can replace this xp can be replaced by xn using this equation. Okay, so I do that. So E times nd over 2 epsilon si into xn plus xp को xn के टर्म्स में लिखें तो it will be nd xn over na, ठीक है. This is equal to VBI, ठीक है. So now I can take out xn common also, so this becomes xn squared over 2 epsilon si na nd into
Na plus Nd is equal to VBI. ठीक है. So again I'll take one more, and then xn will become equal to square root of 2 VBI epsilon s Na over Nd Na plus Nd. ठीक है. That is the value of xn. ठीक है. इज दैट ओके? और अगर XP निकालना हो तो क्या होगा? Na and Nd will be replaced. Na और Nd को रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो, then you'll get the same quantity. Okay, so XP is going to be square root of 2 VBI epsilon s Nd over Na plus Nd. ठीक है. ये तुम्हारी XP की वैल्यू आ जाएगी और ये xn की वैल्यू. टोटल विड्थ क्या होगी हमारी डिप्लीशन रीजन की? इफ यू आर टू कैलकुलेट द टोटल विड्थ ऑफ माय डिप्लीशन रीजन, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? उसकी वैल्यू क्या होगी? xn plus xp. Yeah, so we call this as W. The total width of the depletion region is called as W, and W is equal to xn plus xp. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, and you can find out the value of xn and xp. Okay, but if now we have done this much, we have found out the width, and we have found out the electric field, we have found out the potential. Everything is almost known to us in our p-n junction diode. In this is all in equilibrium. Please understand that all of this that we have done till now today is in equilibrium. Okay. Now, assuming that we had a p-n junction in which p-type doping was much higher than the doping on the n side, what would happen in that case? If the p-type doping was much higher than the doping on the n side, what would happen in that case? क्या होगा? XP would be much less than X. Yeah, so XP will be much less than xn. Okay, so if your Na is much greater than Nd, okay, if p-type doping is much higher than the n-type doping on the other side, then your Xp is going to be much smaller than xn. So that implies that your W is going to be effectively equal to xn. Okay, almost all your depletion region width is going to lie on the n side. Okay, there will be no depletion on the p side effectively, almost. Okay, almost negligible depletion on the left side. Okay, so these kind of junctions are called as one-sided p-n junction. Okay, why is it called one-sided p-n junction? Because almost all the interesting physics is happening only on the lower doping side. Okay, almost nothing is happening on the higher doping side. The higher doping side is acting almost like a metal. Okay, we'll get into why it is acting like a metal once we talk about Schottky junctions. Okay, the junctions between semiconductor and metal, we'll talk about those later on. But the higher dope side acts almost like a metal. Almost there is no depletion region. All the interesting things are happening on the lower doping side. So that is called as the one-side p-n junction. Everything is happening, although everything is your p side is doped much higher than the n side. All the depletion happens on the n side. Okay, so all the voltage drop is also going to happen on the n side. If you look at the voltage drop, अगर हम इसको ये बहुत कम हो जाता, if xp was minus xp was a very small quantity, okay, xp was a very small quantity, then what would happen? Your potential change on the left hand side will be very small. Okay, the potential will primarily change on the right hand side. Okay, Sir, yeah.
So in the equations of xn, xp, where did the E go? Charge E. Nowhere. Just it went away in my mind. You are right. So we'll have a E. कहाँ था E? So ऊपर था नीचे नीचे था? आएगा E. हाँ नीचे आएगा. नीचे आएगा. It did not go anywhere. Okay. Thank you. Again, तुम लोग कंप्लेन करते रहते हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो है बहुत परेशान करते हैं हमें, क्योंकि डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन इस डिस्कशन की वजह से ही सही मैं इतनी गलतियाँ करता हूँ, वो लोग नहीं हेल्प करेंगे तो कैसे होगा बताओ. थैंक यू संजना. Was it संजना or somebody else? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so this is called as a one-sided p-n junction, and let me write down one final thing before we leave today. The value of W. Okay, so W is going to be square root of 2 epsilon silicon VBI over E into Na plus Nd over Na Nd. Okay. Now, if we were to assume this particular situation where Na is much higher than Nd, then this Nd can be neglected. So this will be Na gone. So we'll have this situation. Okay. Again, Na is much higher than Nd, Na is gone. So the only thing that remains is Nd, E times Nd in the denominator. Okay. So that is all we have for today. We will continue on Wednesday. And if you have a question, I can take the questions now. So if you have any questions, anybody in tutorial or anywhere. Hello, sir. Yeah. If those who want to leave, they can leave. Okay, there will be no more quiz or anything today. Okay, I have already taken a lot of time today, so I'm going to stop now. So this is just an informal discussion. If you want to leave, those who want to leave, they can leave. Okay. Yeah, go ahead. सर Yeah. सर मैं बस ये कह रहा था कि आपसे कि सर आप एक्स्ट्रा क्लास लगातार मत लिया करो सर, समझ आना बंद हो जाता है 1 घंटे बाद ना थोड़ा. Yes, sir. कोई बात मतलब नहीं. आज आपने लेनी भी है तो मतलब अगले किसी और दिन ले लो यार, फिर मतलब वो लगातार में एकदम मतलब फ्लो बिगड़ जाता है, थोड़ा नहीं समझ आता बीच में. चलो मैंने फ्लो को वो कंटिन्यू रखने के लिए किया था आज, क्योंकि आज का टॉपिक जो है थोड़ा ऐसा था. ठीक है. नहीं सर, वो चलो. मतलब फिर 4 घंटे हमारी लगातार क्लास चल रही है ना सुबह से, तो फिर मतलब फिर समझ नहीं आता 2 घंटे सब लगातार सब में. सब लोग क्लास ले रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो क्लास नहीं ले रहा है. No, नहीं sir. सर, सबकी हो रही है क्लास. सबकी हो रही है, मुझे लग रहा था नहीं हो रही होंगी. हाँ. नहीं नहीं, सबकी हो रही है सर. बोर्ड पे खाली मेरी हो रही है. हैं? बोर्ड पे. Yes, sir. Yes. Board पे. हाँ जी सर. बाकी कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हो तुम लोग? सर 4 तो ईसी के हैं और एक इकोनॉमिक्स और एक क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग. ईसी के 4 कौन से हैं? एक तो ये हो गया, एक सर्किट थ्योरी. सिस्टम, नेटवर्क सर्किट थ्योरी और एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर. अच्छा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी अब ईसी का हो गया है. ओके. हाँ हाँ. और स्पर्श पढ़ा रहे हैं उसको? सर Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ा रहे हैं सर? अब तो कंप्यूटर से होते हैं सब काम. अरे कोई बात नहीं, सीख लो यार. क्यों रोते हो इतना तुम लोग? एक ही चीज़ क्यों सीखनी है? कुछ कितनी अच्छा बोरिंग हो सीख जाएगी लेते लाइफ. सर subject. अरे नहीं नहीं, वो भी अच्छा है. क्यों नहीं है अच्छा? हमने नहीं सीखी कभी. CAD AutoCAD सिखा देते, पेपर पेन से ड्राइंग सिखा रहे हैं. अरे यार वही तो, उसमें ही तो मजा है. कंप्यूटर पे कितना सर, काम आगे करोगे? बढ़ना चाहिए उंगलियों सर, में हमें उंगलियों में innovation दर्द हो रहा है मेरी चाहिए तो इंडिया कंप्यूटर में. पे काम कर करके. सर ऐसे क्या कह सर रहे हो? समझदार नहीं बनेंगे सर. सर रोबोट्स बनेंगे इंडिया में. सर समझदार लोग कैसे बनेंगे इंडिया में? किस चीज़ से? सर हम अगर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं ये सब जॉब्स करने के लिए, तो मतलब ड्राइंग करने जैसी चीज हमें कंप्यूटर पे छोड़नी चाहिए, रेदर देन हमें कंप्यूटर्स बनाने चाहिए जो ऐसा काम कर सके हमारे लिए. हम इसी चीजों में फंसे रहेंगे आईआईटीएंस, तो फिर ऐसे तो ना चलेगा. अभी देखना तुम किस किस चीज़ों में फंसे रहोगे. चिंता मत करो. ये तो कुछ भी नहीं है. खाली एक ही चीज़ में फंसे रहोगे, पैसे कैसे कमाने हैं. अनफॉर्चुनेटली है हेलो केवल वो. सर.
हाँ गो अहेड। सर कॉलेज कब खुल रहा है सर? कौन बोल रहा है ये तुम्हारे शिवांश? यस सर। पता नहीं यार, सरकार ने तुम लोगों के लिए तो खोला ही नहीं अभी भी। सर 15 अक्टूबर के बाद सर थोड़ा सा सर ऑप्शनल कर दो सर आने को। क्या ऑप्शनल कर दो? मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है? मैं तो चाहता ही नहीं था कि ये हो उससे, क्योंकि ये कहीं जाने वाला नहीं है कोरोना वोरोना। अब जो बीमार होगा वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं जाने वाला ये। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी है। आईआईटी के हाथ में भी नहीं है अभी तो। सरकार नहीं बना करा हुआ है, स्कूल्स खोल दिए, कॉलेजों के लिए बनाई है। पता नहीं खैर क्या क्या लॉजिक है उसका, लेकिन है। सर ऑप्शनल कर दिया है अभी के लिए, मतलब जो कॉलेज खुलना चाहते हो वो खोल सकते हैं। नहीं नहीं, कॉलेजेस के लिए ऑप्शनल नहीं है, स्कूल्स के लिए ऑप्शनल है। कॉलेजेस कैन नॉट ओपन, दे कैन ओपन ओनली फॉर पीएचडी, ओनली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एक्सपेरिमेंटल वर्क। ओनली फॉर दोज पीएचडी स्टूडेंट्स इट इज ओपन, otherwise it is not open for anybody else. Colleges are not, only schools are. Maybe a new notification has come in the last 2 days, I don't know, but जो 3-4 दिन पहले जो आया था उसके हिसाब से तो केवल schools खुले हैं, colleges नहीं खुल सकते। Only PhD students are allowed, and only those PhD students who are doing experimental work. Who will determine that, I don't know, but सर इतना सारा सर रोज क्लासेस होती है 6-6 8-8 घंटे लैपटॉप पे, सर नहीं हो पाता सर। वो तो मैं जानता हूँ यार, क्या करें यार, ज़िंदगी पता नहीं कैसे चलेगा ये। मुझे भी दुख होता है तुम लोगों के लिए, मुझे अपने लिए भी दुख होता है, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आता है जब तुम लोगों की शक्ल दिखाई देती है। अभी खाली कंप्यूटर पे क्या कहते हैं, बोरिंग है। इतना बोरिंग नहीं है जितना वो लैपटॉप पे लिखने में होता, लेकिन तो भी बोरिंग है कंपैरेटिवली। क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है, शक्ल देखते हैं, समझ में आता है तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। अभी तो कुछ नहीं, मतलब इतना मज़ेदार नहीं है। सर प्रैक्टिकल्स भी हमें लिखने को बोला है और सिर्फ 5 मिनट की वीडियो भेजी है उसकी। बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ बोल रहे हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में नहीं है वो सब। सर प्रैक्टिकल की वेटेज कितनी होगी? पता नहीं यार, अभी डिसाइडेड नहीं है। मोस्ट लाइकली कोई वेटेज नहीं होगी उस टाइप की, या 5-10 नंबर हो सकती है मैक्सिमम। मतलब अगर मतलब सिंसियरली तुम लोग कुछ कर रहे हो, थोड़ा बहुत सीख रहे हो, उसके अलावा कोई ऐसा वो नहीं होने वाला। चिंता मत करो ज़्यादा उसकी, ठीक है? सर मेन तो कोर्स पे ही ध्यान देते हैं, बाकी तो नहीं, अगर मेन बात यह है तुम समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लो उसके, क्या कहते हैं कि इसमें क्या सीखने को मिल रहा है या फिर जो भी है। लेकिन क्या कहते हैं, इतना इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, इतनी चिंता मत करो। ओके सर, ठीक है। सर ये जो क्लासेस हम करते हैं सर, इसको जूम पे कर सकते हैं सर? यार जूम का हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। विनोद अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरा मन नहीं है अपनी जेब से पैसा खर्च करने का। ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत कुछ। जो सर MS टीम्स के ऊपर जो प्लगइन है उससे नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं, वो प्लगइन जो है वो केवल जूम के साथ इंटरेक्ट करता है, तुम्हें उसका लिंक वगैरह भेजता है। वो प्लगइन का कोई वैल्यू नहीं है वैसे, उसके लिए जूम का लाइसेंस चाहिए अलग से। विनोद के पास पैसे बचे थे, मेरा सारा पैसा इसमें खर्च हो गया। जो हमें आईआईटी ने 1 लाख रुपए दिए थे सिस्टम को सेटअप करने के लिए, तो मेरा सारा पैसा इस कैमरा वैमरा में खर्च हो गया। मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैंने अपनी जेब से ऑलरेडी 4-5 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगा चुका हूँ, 1 लाख से भी ऊपर। मेरा कंप्यूटर था पहले से, लेकिन उसके अलावा भी मेरा खर्च हो गया ऊपर। अब और मन नहीं है यार, मतलब सॉफ्टवेयर पर पैसा खर्च करने में थोड़ा दुख होता है मुझे ऑनेस्टली, वरना मैं कर भी देता। ठीक है। नहीं तो सर जैसे हमने उसमें जब लॉगिन करा था हमारे IIT IT से, तो हाँ। उसमें ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि मतलब तुम्हारी जो वो लिमिट है, टाइम लिमिट, वो अब खत्म हो गई है। तो वो मतलब क्या हमको हमारी G Suite ID से हमको बेनिफिट मिला है, या वो क्या था वो विनोद ने जो तुम्हें लिंक भेजा उससे मिला है बेनिफिट, क्योंकि विनोद ने सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है जूम का। मतलब सर हम यदि डायरेक्ट ही हमारी G Suite ID से लॉगिन करते बिना उस लिंक के थ्रू, तो हमको मतलब सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है।
यूट्यूब भी बढ़िया है सर, ये अच्छा ही है। हाँ यूट्यूब पे मैं वैसे ये जो मैं बाद में अपलोड भी कर देता हूँ जो बेस्ट क्वालिटी होती है उस तो मुझे लगता है यूट्यूब भी ठीक ही है। Yes. लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्ट होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन अब नहीं है तो। विनोद ने बोला था, मैंने भी बोला था एक्चुअली इंस्टीट्यूट से कि भाई जूम, विनोद का एक्सपीरियंस के बाद तुम लोगों ने मेरे से कहा कि जूम कर देते हैं, तो मैंने इंस्टीट्यूट को ईमेल लिखा था कि भाई जूम दे दो हमें, तो उन्होंने दिया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रहे तो। Anybody else has a question? No? Okay then, we'll stop and we'll continue on Wednesday. Okay, bye bye.